Very good evening, Sat Shri Akal. Today we are going to discuss with the topic unsound mind, section 84 and section 85 of the Indian Penal Code, which deal with the unsoundness of mind. One thing more, that insanity word is not used at all under section 84 or in section 85. कहीं भी insanity word यूज नहीं किया गया, सिर्फ वर्ड यूज किया गया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के रिगार्डिंग. तो काफी इंपॉर्टेंट है. जनरल डिफेंस के रिगार्डिंग में बात करें तो 84 सेक्शन क्या कह रहा है? नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द एसेंशियल थिंग इज कि द टाइम व्हेन द एक्ट वाज कमिटेड, दैट टाइम इफ दैट पर्सन जो था if he was unsound at that time, तो कोई offense नहीं commit किया. तो ये important है कि at the time of committing that offense, at that time he must be of unsound of mind. If he so, then there will be no punishment at all in the penal code. तो इसलिए बिल्कुल भी है, if he is incapable of knowing at the time of doing that act, if he is incapable of knowing the nature of the act, कि वो क्या कर रहा है उसको खुद को नहीं पता, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Even he do not know anything about कि जो act कर रहा है whether it is contrary to law or whether it is wrong thing, इसको बिल्कुल भी नहीं पता. तो अगर वो act कर रहा है, if that person has committed such act, then there is no punishment in the eye of law as he has committed no offense at all. तो पूरा जनरल डिफेंस उसको दिया गया इसके रिगार्डिंग. तो पूरा डिफेंस उसके रिगार्डिंग. लॉ में प्रिजम्पशन है that every man is presumed to be sane. So this presumption does not apply to a man whose cases is governed under section 84 and 85, because 84 and 85 is the exception of that general rule. What is the general rule? That every man is presumed to be sane, and 85 section is the exception of that principle. So the reason, however, only why a man is exempted is that his act being totally unintentional, involuntarily, as they are unintelligible. ना तो वो उसकी कोई इंटेंशन है, ना ही उसकी कोई वॉलंटरली एक्ट किया उसने, इनवॉलंटरली एक्ट है, और मोर ओवर ही इज अनइंटेलिजेंट पर्सन. तो इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. इंसैनिटी जो बेसिकली है इज अनदर नेम फॉर मेंटल अबनॉर्मलिटी. तो वी यूज द वर्ड अनसाउंड ऑफ माइंड. मैं यहाँ पर एक बात फर्दर क्लियर कर दूं, अनसाउंड माइंड में बहुत ये जो वर्ड है काफी वाइडर वर्ड यूज किया गया हमने. इसमें इनसेन पर्सन भी आते हैं, इसमें इडियट पर्सन भी आते हैं. इडियट कौन होते हैं? इडियट आर दोज पर्सन जो बेसिकली बाय बर्थ हु आर टोटली इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द थिंग. उनको खुद को नहीं पता कि उसका नाम क्या है, उसको खुद को नहीं पता उसके पेरेंट्स का नाम क्या है. सो बाय बर्थ जो पागल होते हैं, जिनको पता नहीं है, वो इडियट होते हैं. और जिनको अटैक होता है एट द टाइम अटैक, जब वो अटैक हो रहा होता है तब वो उनको पता नहीं होता, तो वो होते हैं इनसेन पर्सन, अनसाउंड ऑफ माइंड पर्सन. तो यहाँ पर सबको कवर किया गया अनसाउंड माइंड के रिगार्डिंग, इसलिए हमने वर्ड यूज किया अनसाउंड ऑफ माइंड. तो इंसैनिटी इज अनदर नेम फॉर मेंटल abnormality ड्यू टू वेरियस फैक्टर एंड एग्जिस्ट्स इन वेरियस डिग्रीज. Insanity is popularly denoted by idiocy, madness, lunacy, and all the other forms of mental abnormality known to the medical science. और medical science में इसको क्या नाम दिया गया है, वो सभी नाम से इस सेक्शन में वो फॉलो करेंगे. तो टेस्ट ऑफ इंसैनिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको आप MC मैकनॉटन, जो मैकनॉटन केस के नाम से जानते हैं, बिकॉज दिस इज द लीडिंग केस अंडर सेक्शन 84. मैकनॉटन केस नंबर ऑफ टाइम्स प्री में पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम्स मेन में पूछा गया है. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिसको स्टूडेंट को पता होना चाहिए. नो राइट एंड रॉन्ग टेस्ट जो है फॉर्मुलेटेड इन मैकनॉटन केस 1843. इन दिस केस द लॉ रिलेटिंग टू द इंसैनिटी इज टू बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाईज गिवन बाय द 15 जजेस. तो 15 जजेस ने रिप्लाई किया था कि उसके बाद वो एक नतीजे में पहुंचे थे कि यार दिस इज द रूल. टेस्ट ऑफ इंसैनिटी का उसने रूल बना दिया था. तो वो रूल है क्या? फर्स्ट रूल, every man is presumed to be sane. This is the first rule.
that every man is presumed to be sane and to possess a certain degree of reason to be responsible for his crime unless the contrary is proved. So definitely जब भी कोई person offense commit करता है तो we presume that he is a sane person. Unless the contrary is proved, he has to prove that his case fall under section 84. He has to take the plea of self-defense that I was unsound mind. उसको prove करना होगा. Second thing, the defect of mind and knowledge should be seen at the point of the time when the crime was committed. As I said earlier, the time when the offense was committed is important. If at that time the accused was unsound of mind, जब वो पागल था, he had no knowledge कि वो जो act कर रहा है whether it was contrary to law or it is wrong. तो ये भी important है कि at the time of the offense हम लोग चेक करेंगे क्या उसको knowledge थी, क्या उस समय वो unsound mind था, तो ये important है. Third, the test is in the power of distinguish between right and wrong, not in the abstract but in regard to the particular act committed. हम लोग ये नहीं मानते कि हाँ भी वो पूरे दिन में क्या एक्टिविटी करता है, वो सभी चीजों को रॉन्ग और राइट लेके चलता है या नहीं चलता. हमें अब्स्ट्रैक्ट वे से हमने नहीं देखना. सो वी हैव टू चेक कि द एक्ट विच ही हैड कमिटेड, क्या वो एक्ट पर्टिकुलर एक्ट उसके रिगार्डिंग उसको रॉन्ग और राइट का पता था या नहीं था. वी आर नॉट हियर डीलिंग विद दैट नंबर ऑफ एक्टिविटीज डन बाय सच पर्सन. वो पूरे दिन में क्या एक्टिविटी करता है, राइट या रॉन्ग, वो हमने जज नहीं करनी. बट व्हाट वी हैव टू जज इज दैट पर्टिकुलर एक्ट, वेदर दैट एक्ट वाज कमिटेड with intention or not. At the time of committing that act, whether he had a knowledge that he has committed a wrong or not. If he does not have that intention, that knowledge, तो उसकी कोई liability law में नहीं है. Fourth point, if a man commits a crime under an insane delusion, he would be responsible only to the extent he could have been if he supposed facts had existed. अगर कोई person delusion में अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो लॉ कहता है हम लोग ये चेक करेंगे कि या उसको एग्जैक्टली वो फैक्ट के बारे में पता था या नहीं पता था. इफ ही हैड दैट नॉलेज कि उसको फैक्ट के बारे में पता था तो उसकी लायबिलिटी फिक्स है, अदरवाइज ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इज नॉट लायबल अंडर द लॉ. फिफ्थ पॉइंट, नॉलेज merely of the wrongfulness of that act is sufficient, and coupled with the fact that it is contrary to law, it renders the coupled accused liable. अगर उसको नॉलेज थी कि जो वो एक्ट कर रहा है that was wrongful act, अगर उसको फैक्ट के रिगार्डिंग पता था कि that he has committed such act which is contrary to law, that means उसको 84 and 85 की एक्सेप्शन में फॉल नहीं किया जाएगा, उसको डिफेंस नहीं दिया जाएगा. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसेंशियल ऑफ द डिफेंस अंडर सेक्शन 84 एंड 85 में अगर आप डिफेंस लेना चाहते हो तो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू प्रूव, accused have to prove. The defense under the requires the following element to be established. First, the accused was suffering from the unsoundness of mind. कब? At the time of committing that offense. At the time of committing that offense, if that time he was unsound mind, तो definitely ये पहला ingredient है जो आपको prove करना होता है. Second ingredient which you need to prove that he was incapable of knowing the nature of the act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law. At the time of doing that act, he was of unsound of mind. Second thing, he did not know about the nature of the fact. He didn't know whether the act he has committed was wrong or either contrary to law. So you have to just prove these two ingredients. If you prove these ingredients, then definitely law will give you the full exemption. तो आपको acquit किया जाएगा. Further, most important point thing कि a man in section 84 is exempted from punishment because there are two reasons that why we have not punished these for those persons who are totally incapable of knowing the nature of the act. These are the two reasons. First, the furor sui punior. That means a madman is punishable by his madness only. We presume that the God has punished them.
If the God have given them punishment, then double jeopardy as per law. They cannot be held liable again. नेचर ने उसको पनिशमेंट ऑलरेडी पनिश कर दिया है, उनको पागल बनाकर. आप फिर से उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते. दिस इज द फर्स्ट रीजन कि क्यों हमने उसकी पनिशमेंट खत्म कर रखी है. सेकंड थिंग, Furus nulle voluntas est. That means that a madman has no will. He has no intention towards any person. He had no knowledge of his act, that his act has harmed anybody or not. So a madman has no will. If he has no will, then there will be no punishment for that act which has done by such person. That's important. Then अगर हम बात करें, there are two important legal points जो हम बात करें. The difference between the medical insanity and the legal insanity. Medical insanity and legal insanity काफी इंपॉर्टेंट है. प्री पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत रेयर चांस से पूछा जाता है, लेकिन मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है. मेडिकल इंसैनिटी एंड द लीगल इंसैनिटी, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स. सो गाइस, द फर्स्ट टॉपिक, अगर मेडिकल इंसैनिटी की बात कर रहा हूं, it is depend slowly on medical grounds, while legal insanity depend on the factor as to be proved in a court of law to enable the accused to be acquitted of the charge. So legal insanity, he has to prove in a court that I am totally insane person, right? Whereas medical insanity, the certificate is given by a doctor. And in legal insanity, the certificate is given by the court itself that he is an insane person. That's important point. Second thing, medically, a person may be declared or certified sane or insane, both, as the case may be. But legally, he will be held insane only if he successfully proves the requirement of the law under this section, which will entitle him to be acquitted of the charge. So that means that in defense, his counsel has to prove that his client was of unsound of mind at the time when he has committed such an offense. He did not know whether his act was contrary to law or whether it is a wrongful act. So if he did not know anything about, then he cannot be punished for such offense. So this is, his counsel has to prove such kind of things, right? Then we have a case. There are two important cases discussed. हम करेंगे Lakshmi versus state. Lakshmi versus state. That is AIR 1959, Allahabad High Court, 534 page number. Important one. The accused, a drug addict person, was convicted for the murder of his step brother, with whom he had strained relation. उसके relation अच्छे नहीं थे उसके step brother के साथ. So he used to make demand for money from his relation, including his step brother. तो वो अपने step brother से पैसा मांगता था क्योंकि वो drug addict person था. One day, a few days before the incident, जब उसकी जिसने accused ने अपने step brother को उसकी death की है, so a few days before the incident, he had an altercation with his step brother. When he assaulted his step brother with a farsa, that is a weapon, a sharp weapon, farsa. A later raised an alarm. जब उसके वो blow किया तो वो उसने alarm लगाया कि बचा लो. So a number of persons reached the spot. At this, he fled away from the spot. The accused fled away from the spot with farsa along with him. So accused later on take the defense of insanity. At the time, I did not know anything. I was doing a wrong, or whether I did an act which is contrary to law. So he take a defense of insanity. कोर्ट ने हेल्ड किया that there was an attempt to evade arrest. जैसे ही पब्लिक वहां पर गैदरिंग हुई, आप भाग गए. That means your conduct itself shows that you are not insane at the time of committing that offense. आप भाग गए, आपको पता था. ये एक्ट, ये कंडक्ट आपका प्रूव करता है that you are not insane at the time of when you had committed such an offense. So held that there was an attempt to evade arrest when he fled away from assaulting his step brother. Also, there was an evidence of motive against the accused. Thus, the conduct prior to or subsequent to the incident shows that he was not entitled to the benefit of Section 84. Another case, Dahya
शगुन भाई ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1964, Supreme Court 1563, page number. Important thing. In this case, the appellant जो पर्सन था जिसने अपील फाइल किया है, the appellant killed his wife while they were sleeping in their bedroom. दोनों इकट्ठे थे रूम में और कोई था ही नहीं, तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार डाला. His wife at about 3 a.m. cried that she was being killed by his husband. मुझे मार डाला. Obviously, the neighbor started gathering there and asked the accused to open the door. When it was opened, when the door was opened, he was found dead. उसकी वाइफ मर चुकी थी with a number of wounds on her body. What happened between the husband and the wife? Nobody knows except the accused himself. सिर्फ हस्बैंड को ही पता था कि उनके बीच में क्या हुआ, उसके अलावा किसी को पता नहीं था. So the accused was locked up for the arrival of the police, क्योंकि जब तक पुलिस आती तब तक उन्होंने नेबरों ने वहां पर उनको लॉक करके बिठा के रख दिया. So the accused was locked up for the arrival of the police, but he sat calm and quiet in the room. He was not abusing and he replied to the question put by the police inspector. जो भी उनसे क्वेश्चन पुट किया था वो उसका रिप्लाई करता था. So his conduct before the magistrate indicates that he was in a fit condition to appreciate the question put to him, but finally he made up his mind to not to make the confession. पहले उसने माइंड बना दी confession कर दूंगा, लेकिन बाद में उसने confession नहीं किया and he take the plea that he was of unsound mind. लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया that the accused had a motive to commit the murder, evidenced by his letter to the father of the deceased. He was not under any fit of insanity at the time of commission of the offense, so not entitled to take any kind of defense under section 84 of the Indian Penal Code. तो ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. We have another, हम लोग बेरट की बात कर रहे हैं. 85 जो 4 सेक्शन है वो ने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया. Now 85 सेक्शन क्या कह रहा है, वहां पे लिखा है एक्ट ऑफ पर्सन incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. नशे की हालात में इफ यू आर अंडर इंटॉक्सिकेशन कंडीशन तो भी आपको पता नहीं लगता कि उसने क्या एक्ट करना है. जिसने शराब पी रखी, जिसने लिक्वर पी रखी है, जिसने कंज्यूम की हुई है, उसको भी कई बार पता नहीं लगता है वो क्या एक्ट कर रहा है. तो उसको भी डिफेंस में रखा गया 85 सेक्शन में. लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशंस. 85 क्या कह रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन. नशे की हालात में, चाहे वो उसने ड्रग ली है, चाहे उसने लिकर पी है, और एनी अदर जो है सब्सटेंस लिया जिससे उसको नशा हो गया. इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, नशे की हालात में उसको पता नहीं था उसने क्या एक्ट किया है, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided the condition is that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. 85 सेक्शन में आपको डिफेंस तभी मिल सकता है जब आपको जबरदस्ती बिना आपकी कंसेंट के, बिना आपके विल के आपको ड्रग्स या लिक्विड दी गई है. If you are forcefully given such things, so definitely you can take the defense. But if you voluntarily consume the intoxication substance, that you cannot take the defense of 85 section. तो 85 सेक्शन ने प्रूव कर दिया कि अनसाउंड माइंड में काफी जो है वो पर्सन आते हैं. इडियट, ल्यूनेसी, insanity, and the unsound mind also cover the person who was under intoxication. तो ये भी कवर होते हैं. तो 84 एंड 85 हमने कवर कर लिया. इनमें अगर आपको प्रॉब्लम है, if you face any problem in regard to the section 84 and 85 of the Indian Penal Code, you can comment, तो मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा. तो गाइस प्लीज इसको देखते रहना, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. मैं सिर्फ यहाँ पर जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए ही आपको जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको जो सब कुछ कवर करवा रहा हूँ. तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना. अगर लॉ के स्टूडेंट है तो वो भी स्टार्टिंग से वो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनके लिए काफी ईजी हो जाएगा. तो थैंक यू सो मच. शेयर करते रहिए आप अपने फ्रेंड के साथ. सत श्री अकाल. थैंक यू.